EMI lecture 2. Write the heading beta, Lenz law. Lenz law. See beta, Lenz law gives the direction of induced EMF in a current beta. Okay, so I can say here the direction of induced current, the direction of induced current in a coil is in a direction such that it opposes the cause of it, यानी जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट बहेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बह रहा है, अगर मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो करंट जो होएगा ना नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा. ठीक है, इट इज consequence of law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ठीक है, so it is based upon what बेटा, law of conservation of your energy. एक बार डेफिनेशन को सुन लो आप लोग आराम से, ये पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होता है. The direction of your induced current in coil in a direction such that it opposes the cause of it, यानी जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बहेगा. यानी जैसे हम लोग हिंदी में उर्दू में बोलते हैं ना, जिस थाली में का है उसी थाली में छेद कर दिया, उसी कंडीशन में जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बहेगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देख लीजिए. मान के चलो एक कॉइल है. ओके, एक कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, ये इनटू द पेपर है और इनटू द पेपर है और इनटू द पेपर है और इंक्रीज कर रही है. ये एरो मार्क क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग. तो अब करंट इसके अंदर कौन सी डायरेक्शन में बहेगा बेटा? देखो, टेक योर राइट हैंड. अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर बह रहा है, the current will flow in the coil in such a way that it will not allow the magnetic field inside it to grow. ठीक है, ठीक है. So I can say that if magnetic field B bar inward is increasing, then induced field or current is outward, ऐसा. ओके, आउटवर्ड मतलब कौन सी डायरेक्शन में आएगा? देखा, करंट शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो करंट इसके अंदर इस डायरेक्शन में आएगा. If magnetic field B bar inside is increasing, then induced field or current is outward, that is in the anti-clockwise direction. Clear है सभी को? Is that clear? चलो नेक्स्ट वाला देखो. अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये डिक्रीज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड एंड इट इज डिक्रीजिंग, इनवर्ड है लेकिन स्लोली डिक्रीज कर रही है. मैग्नेटिक फील्ड इज स्लोली डिक्रीजिंग. तो इसके अंदर जो कॉइल है, इसके अंदर करंट कौन से डायरेक्शन में आएगा? कोई बता सकता है? इफ बी बार इज डिक्रीजिंग inwards, then induced current will flow in clockwise direction, so that it will produce
it will produce magnetic field which will not allow B bar inward decreasing. B bar inward decreasing. ठीक है, अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड बी बार है और डिक्रीज हो रही है इनवर्ड में, तो इंड्यूस्ड करंट जो है ना, इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्यों? सो दैट इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच विल नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड टू डिक्रीज. मान के चलो आपके पास 100 रुपए है, और कभी भी बोल रहा हूं कि आपके पास शायद 10 दिन के बाद भी आपके पास 100 रुपए ही होना चाहिए. तो अगर आपने 5 रुपए किसी काम पे खर्च कर दिया तो कोई और आपको 5 रुपए देगा, तो आपका वो कंपनसेशन हो जाएगा और आपका 100 रुपीज कॉन्स्टेंट रहेगा, है कि नहीं? तो अगर B bar inside if it is decreasing, the induced current will flow in the clockwise direction. अगर B bar inward is increasing, induced current will flow in which direction बेटा? B bar inward is increasing, then induced field or current is in the outward यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. आई बात समझ में सभी को? अगर आप मुझे पूछोगे सर अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से. इफ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है यानी चेंज ही नहीं हो रहा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? जीरो. फ्लक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी बेटा? कितना फ्लक्स आ जाएगा एक बार? कांस्टेंट है ना बेटा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान के चलो, पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ ले लेता हूं, उसके बाद फ्लक्स निकालते हैं. अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू योर बी बार डॉट ऑफ योर ए बार, ठीक है ना? अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, E is equals to, ये पूरा एक कांस्टेंट है मान के चलते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज पर द फैराडेज लॉ d∅dt. डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, अगर मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट क्या बनेगा? जीरो. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा और इंड्यूस्ड करंट विल बिकम जीरो. क्लियर है? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो क्या क्या हो रहा है देखो बेटा. इफ बी बार इज कांस्टेंट देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज जीरो एंड इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो जीरो. फिर से एक बार देख लीजिए जल्दी से. लेंज लॉ क्या बोलता है बेसिकली? इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इन ए डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट, यानी जिसके वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट बहेगा. इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा. And if B bar is increasing, induced field or current is in the outward direction. If B bar is decreasing inward, the induced current will flow in the clockwise direction, so that it will oppose the magnetic field, which will not allow the B bar inward to decrease. अगर magnetic field constant है, then flux will be equal to B into A, which is a constant. अगर constant अगर है अपने पास flux, तो EMF का फॉर्मूला क्या है बेटा? E is equals to minus of d∅dt. That is equals to minus of d constant divided by dt is equals to 0. तो ये जीरो हो गया, इंड्यूस्ड करंट विल बिकम फॉर मी जीरो. क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आ गया बेटा? यस सर. चलो छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं. A coil of resistance 2 ohm and area 2 meter square placed in a magnetic field directed outwards to the plane. Directed outwards to the plane. Okay, and it is decreasing at a rate of 4 meter per second. Okay, and it is decreasing at the rate of your
मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, मीटर है ना, वेलोसिटी आना चाहिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका यूनिट 4 टेस्ला रेट इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स, फ्लक्स इज आल्सो मेजर्ड इन योर वेबर और आई कैन से टेस्ला पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बेटा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी बार डॉट ए बार, so b is equals to flux divided by your area, flux is your weber per meter square, rate मतलब time, that is nothing but second, okay, 1 weber per meter square is 1 tesla, so tesla per second लिख सकता हूँ मैं बेसिकली, ठीक है। then find induced current, then find induced current in coil and direction। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लो एक बार आप लोग। कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ 20 ओम, मेरे पास एक कॉइल है, दिस इज योर कॉइल, ओके, एंड इसका रेसिस्टेंस है बेटा, दिस इज द रेसिस्टेंस, R इज इक्वल्स टू 2 ओम्स, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 मीटर स्क्वायर, प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टेड आउटवर्ड है, सॉरी डायरेक्टेड आउटवर्ड है, तो इसको हम लोग आउटवर्ड लेना, so directed outward dot like this, आउटवर्ड डायरेक्टेड है और ये डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई डिवाइडेड बाय dt, इजंट इट, so phi is angle, theta is right now, flux कैसे निकालते हैं बेटा, flux is equals to b into a into your cos theta, theta is angle between, theta is angle between b bar and your a bar, ठीक है। तो outward directed to the plane of the paper and it is decreasing at the rate of your 4 टेस्ला per second, find the induced current बोल रहा है, तो यहाँ पर थीटा कितना बन जाएगी बेटा, 0 डिग्री, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो E is equals to your minus of flux will be equal to B into your A divided by your dt, ये कांस्टेंट होगा, so it is minus of your A into your dB divided by dt, so dB by dt क्या हो जाएगा बेटा, कितना दे रखा है प्रॉब्लम में, dB by dt देखो 4, isn't it, तो E is equals to your कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, माइनस ऑफ एरिया कितना है 2, dB by dt is how much for me, -4, डिक्रीजिंग है ना, तो that will be equal to your 8, so E is equals to your 8 volt, EMF is equals to your 8 volt, अगर EMF आ गया तो इसमें से करंट निकाल सकता हूं मैं, I is equals to mod of E divided by R, E is equals to 8, resistance is 2, so it will be 2 4s, so it will be your 4 amperes, क्लियर है, एक बार देख लो जी फिर से एक बार, a coil of resistance 2 ohm and area 2 meter square is being placed in a magnetic field, इसका डायरेक्शन बता सकता है कोई, आउटवर्ड डिक्रीजिंग है, आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज डिक्रीजिंग, अगर करंट इन द कॉइल क्लॉकवाइज होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो वो तो अपोज करेगा, यहाँ पर तो डिक्रीज करने के लिए देना नहीं चाहिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, सो करंट विल बी फ्लोइंग इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, बताओ क्यों, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो टेक योर फिंगर्स एंड कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो थंब रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से आ रहा वो ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा, यानी अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसको दे रहा है, सो इट विल नॉट अलाउ इट टू डिक्रीज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, आ गया सभी को, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, Yes, sir.
इस हेडिंग लिख लो बेटा, मोशनल ईएमएफ। Motional EMF. Okay. First one is due to translational motion of conducting rod. Due to translation motion of your conducting rod. Clear? तो मान के चलो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है which is into the paper like this. Okay? इसके अंदर अपने पास एक कंडक्टर है, ठीक है? This is your conductor. Length of this conductor is say मान के चलो L. Okay, this is the positive end of the conductor and this is the negative end of the conductor. Velocity of this electron मान के चलो इस direction में. When a conductor is moving in this one, the electron which is being present in the conductor, उसके ऊपर force कौन सी direction में लगेगा बेटा? Magnetic force is acting in the downward direction. This is the end P and this is the end Q. ठीक है? Is it clear? Velocity is perpendicular to the magnetic field beta. Magnetic field is into the paper, velocity is along the x-axis. You know that this conductor is made up of n number of charge particle. Now if I am writing the magnetic force on the charge particle, that will be equal to your charge Q into your V bar cross of your B bar. Okay, for electrons, you know the direction will be opposite. So F bar will be equal to minus of your I cap cross, this one is your minus of your k cap. See, velocity is moving in your I cap, magnetic field is in your minus of your k cap. So I cap cross j cap, I cap cross of your j cap will be equal to how much beta? Charge of electron is negative. This is the charge of your electron. Minus of minus, this will be your plus. I cap cross k cap will give me how much beta? This is I, this is j, and this is your k. I cap cross k cap will give me minus j cap. This minus and minus will give positive. So this one is your I cap cross of your k cap. I cap cross k cap will be equal to minus of your j cap. That means force acting on that one is on minus j cap. So initially electron will experience a magnetic field in the downward direction. But hence there is a potential difference across your P and Q. So the electric field will be from which point to which point beta? Electric field will move from the positive terminal to your negative terminal. आगे बात समझ में? So I can write here initially electron will experience magnetic force in downward direction. Hence there is a potential difference across PQ. Okay, so electric field is from P to Q. Okay, and it experiences a force on the electron due to the opposition direction of that of the magnetic field. So magnetic force is in the downward direction beta. Magnetic force is in the downward direction right now. So electron is moving in this direction beta, upward direction. Electron is moving in the upward direction. Why? Because you know the charge of electrons will move in the positive direction, towards your positive direction. Okay, that means there is the force due to the electron and there is a force due to the magnetic force. The net of this must be equal to 0. Due to electric field, you know that E, charge of the electron into electric field,
into charge of the electron is E into this one is V bar cross B bar. That must be equal to 0. F net must be equal to 0 initially. Okay. Then from this one I can write here right now for this given condition. E into your E bar is equals to minus of your E into your V bar cross of your B bar. This one will get cancelled. So electric field E bar is equals to your V bar cross of your B bar in opposite direction with negative sign. Isn't it? So now I can calculate now potential difference will be, what is the potential difference beta? Integral of your dV will be equal to integral of your E bar dot dr bar. This one is minus, this is from the rod Q to P. This is also rod from your Q to P. Potential is from which terminal to which terminal beta? From your terminal of your P to your Q part of relation. Within the battery it is from negative to positive. Isn't it? Lower limit to your upper limit. Lower limit is negative, upper positive, positive limit is nothing but of your P. Okay. So it is going from your lower limit to your upper limit part of relation. So if I'm writing this EMF beta, so this will become how much for me? Integral of dV is nothing but V. And upper limit is your P and lower limit is your Q. That is equals to your, this one is your minus integral, this one is minus V bar cross of your B bar into your dr. So this is Q and this is your P. Minus and minus, that will become for me your plus. So this is your potential of your P minus potential of Q. Substituting upper limit minus lower, that will be equal to your plus. This will be your integral of your V bar cross B bar into your dr is nothing but length of the conductor. That is nothing but dl bar. From where? From Q to your P. Okay. So the EMF will be equal to how much better right now? Vp minus Vq will be equal to your EMF E. E is equals to your, this is your V into B into your L. Can I write like this? Or else I can write this one as V bar cross B bar into your DL bar. So EMF of your conductor is being calculated with the formula E is equals to your BLV. Okay. Let's see here. E is equals to BLV will be zero. Will be zero if any two are parallel. Scalar product, na beta? Okay. Is it clear? E is equals to BLV will be zero if any two are parallel component part of relation. Is it clear? I'll explain you once again. So whenever a rod is moving in a magnetic field, due to the motion of the electric magnetic field, rod in a magnetic field, the EMF produced is given by the formula E is equals to your BLV, or it is V bar cross B bar into your DL. If out of V, B and L, if any two components are parallel, then the induced EMF in that one will be zero. Induced EMF will be zero. Is that clear? See once again. We have got a conductor PQ. Direction of magnetic field is into the paper. So it is your minus of your K cap. And rod is moving in the positive X direction. Force acting on the charged particle is how much better? What is the force formula? F is equals to Q into V bar cross B bar. For electron, if I'm taking right now, so it will be F is equals to your I bar cross minus of K. So it is I bar cross K bar. So that will be equal to minus J bar. That means initially the electron will experience a magnetic force in the downward direction. But the electron will be moving in the upward direction. Hence, there is a potential difference across PQ. Electric field is from your P to Q. So net force acting on that one is zero. So electric field plus magnetic field will be zero. So if I'm simplifying that one, we are getting the formula E is equals to your E is equals to minus of your V bar cross of your B bar. Okay. Now in order to integrate it, this is your electric field beta. What is E here beta? E is your electric field. From electrostatics chapter, we know that electric field E is equals to negative potential gradient. E is equals to minus of your dV divided by dr. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आया था, तो इसमें से मैंने dV by your dr, तो dV को मैंने बाहर निकाला, इंटीग्रल ऑफ E into dr. E is electric field का वैल्यू मैंने यहाँ पर डाला, so minus minus plus बन गया, इंटीग्रल ऑफ dV is nothing but V, upper limit minus lower limit substitute कर लिया, so if I'm substituting that value, we are getting the potential will be equal to how much for me? Vp minus Vq is equals to your integral of V bar cross V bar into DL. So E is equals to your BLV, and it will be zero if any two components are parallel to each other. Is that clear, beta?
इज दैट क्लियर? यस सर। इसमें कोई डाउट है क्या? देखो डेरिवेशन में यहाँ पर मैं नेट फोर्स क्यों जीरो लिया, कोई बता सकता है? क्योंकि विद इन द कंडक्टर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर जीरो। क्लियर है? मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, देख लो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ इस तरह से, ये देखो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह से लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स जो है ना डाउनवर्ड लगेगा इस तरह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी में है या रेस्ट पे इनिशियली, मतलब नेट फोर्स दोनों की वजह से जीरो होना चाहिए, isn't it? So then only it will move from your lower potential to your higher potential. Clear? So what is the motional EMF का formula बेटा? E is equals to, what is the formula? E is equals to your BLV. Formula is E is equals to your B into L into V. So this is your very important formula. अगर इसके अंदर कोई भी दो कंपोनेंट्स अगर पैरेलल है तो ईएमएफ कितना बनेगा? जीरो। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी इज द वेलोसिटी एंड बी इज योर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो डायरेक्शन कैसा देता है, डायरेक्शन ऑफ induced current is from low potential to high potential, from low potential to high potential. Clear? So direction of your induced current will be from where to where beta? It will be your from low potential to your high potential, given by Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule. Okay. So take your left hand beta such that thumb should be keep in the direction of velocity. It will give me the direction of velocity. Okay, forefinger field direction, magnetic field direction, that is your B bar. And middle finger, if I am taking, middle finger direction of induced current, direction of your induced current. ठीक है, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए see beta, Fleming's left hand rule. Take your left hand such that thumb is in the direction of the velocity of the conductor, यानी जो डायरेक्शन में मोशन ऑफ कंडक्टर है ना वो डायरेक्शन में आपको थंब रखना है, and forefinger in the direction of magnetic field and middle finger will give the direction of your current, will give me the direction of your current. आगे बात समझ में सभी को? Is that clear? ठीक है,
कौन किया? हो जाओ बेटा। आओ भैया। ठीक है बेटा, ये वाला जो डायग्राम ड्रॉ करा ना इसी की वजह से। ओके, ये हो गया P और ये हो गया Q। So due to rod, what is the magnetic induced EMF का formula बेटा? E is equals to BLV and direction is given by your Fleming's left hand rule. So stretch the three fingers of your left hand such that thumb gives the direction of motion of conductor, middle forefinger gives the direction of magnetic field, and the middle finger will give me the direction of induced current. आ गया सभी को? Is it clear? Keep a note there बेटा। मान के चलो मेरे पास एक कंडक्टर इस तरह से, okay, and this conductor is moving with velocity like this. This is at one terminal and this is your another terminal. This is your positive and this one is your negative. This is a point P and this is your point Q. This is the length of the conductor, that is nothing but of your L. It is moving with velocity V and magnetic field is into the paper. मान के चलो the magnetic field is into the paper ऐसा। तो इसके अंदर जो induced EMF डेवलप हो रहा है बेटा, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, the induced EMF is like this. We are representing or removing the rod and connecting it like a battery. ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल, ये हो गया स्मॉल r, इसका इंटरनल डिस्टेंस हो गया स्मॉल r, ये हो गया पॉइंट P एंड ये हो गया पॉइंट ऑफ योर Q। यानी this rod PQ is equivalent to a battery of EMF E beta. So EMF induced, that is potential difference between P and Q is, which end is higher beta? P is at higher end, so it is Vp minus of Vq is equals to your BL into V। ठीक है, नहीं तो आप लोग लेफ्ट हैंड लेके भी आप बता सकते हो कि पोटेंशियल कौन सी डायरेक्शन में। टेक योर लेफ्ट हैंड and keep the thumb in the direction of the motion of conductor, forefinger in the direction of your forefinger कौन सी डायरेक्शन में बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मोशन इज इन दिस डायरेक्शन। Okay, so induced EMF will be in this direction beta. Take your left hand and keep the magnetic field inward direction. Okay, and thumb represents the velocity of the conductor. Thumb represents the velocity of your conductor. Electron की वजह से, so it will be opposite to direction of your current what we are getting. V bar cross B bar you do otherwise. V bar cross B bar. Cross product also you can take directly. V bar cross B bar will give me direction of your magnetic field. Take your right hand, keep your fingers in direction of V, magnetic field inward. Thumb is moving in the upward direction. That means there is a flow of the current in the upward direction. So higher P will be at higher potential and Q will be at your lower potential. आई बात समझ में सभी को? Is that clear? Is that clear? Direction देख लो सभी लोग. How we replaced the conductor PQ with a battery of EMF over E. E की वैल्यू कितनी होती है? BLV। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो आप लोग को और समझ में आ जाए। इसका डायरेक्शन बताओ आप लोग एक बार। मान के चलो वी आर हैविंग द कंडक्टर लाइक दिस, okay, and it is moving with a velocity right now like this V, making an angle theta with your magnetic field, okay, और magnetic field है मान के चलो into the paper, magnetic field is into the paper like this,
Okay, so this is your P and this one is Q. This is the length L. First identify which end is your positive end and which end is your negative end. Take your left hand and keep the thumb in the direction of your velocity. Okay, V bar cross B bar, V bar cross B bar. Thumb is representing towards the point of your P. So obviously P will be your higher potential and this will be at lower potential. That means we can represent it by a wire with positive terminal like here, negative terminal here, right? This is a point Q and this is a point P. This is a positive terminal, this is a negative terminal. So there is a flow of current from this point to this point. So ये हो गया current I. Clear? So potential इसका अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा? E is equals to your higher potential minus of lower potential is equals to your B into L into V into sin theta. Okay, we need to take the component of the velocity in the direction of your current. इस डायरेक्शन में अपन कंपोनेंट लेंगे इसका v cos theta और इस डायरेक्शन में अपन लेंगे कंपोनेंट v sin theta. Okay, perpendicular to the left one है ना बेटा, perpendicular to that one. Okay, so it is v sin theta into b. Take your right hand and keep the fingers in the direction of your component of sin theta. Magnetic field inwards. The thumb indicated towards what terminal beta? Positive terminal. That means towards the point P. So P will be positive terminal and Q will be your negative terminal. V cos theta is along the length of the conductor bit. I told you if any two components are parallel to each other, यानी V cos theta और L के बीच में angle कितनी होती है बेटा? 0 degrees. So magnetic field because of that one or induced field because of that one will become how much for me? 0 because of VL cos theta as L and V cos theta are parallel. So EMF is equals to 0 because of that. आगे बात समझ में सभी को? Is it clear? Any doubt in this one to anyone? Clear बेटा? Yes, डायरेक्शन sir. निकालने के लिए आप लोग लेफ्ट हैंड रूल लीजिए, or else you can even use your cross product बेटा, or I can write here. We can use cross product. E is equals to your V bar cross B bar into your L bar. So V bar cross B bar के बीच में जो एंगल रहेगी, that will be the direction of your induced current. तो हम जो इंप्रेस कर रहे हैं ना, that will give me the induced current. Clear बेटा? क्लियर बेटा? एक बार देख लो हम लोग क्या क्या करें आज. We have been talking about the direction बेटा. Lenz law का direction निकाले. The direction of induced current in a coil is in a direction such that it opposes the cause of it. It is a consequence of law of conservation of your energy. Consequence of your law of conservation of your energy. Okay. एंड जो डायरेक्शन लेंज लॉ क्या बोलता है बेटा, जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बहेगा. अगर बी बार मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डिक्रीज हो रही है तो इट विल नॉट अलाउ इट टू इंक्रीज इन इनवर्ट, सो करंट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, टेक योर थंब एंड कीप इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. द थंब विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन. तो इसकी वजह से और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. ओके, तो इट इज नॉट अलाउइंग इट टू इंक्रीज, क्योंकि एक ऑपोजिट मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे एक्ट कर रही है. अब यहाँ पर देखो बेटा, इफ मैग्नेटिक फील्ड बी बार इज डिक्रीजिंग इनवर्ट, देन इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो इन द क्लॉकवाइज, सो इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच विल नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू डिक्रीज. इनवर्ट जब डिक्रीज हो रहा है ना, तो करंट इन अ कॉइल व्हाट विल डू, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होने नहीं देगा, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने नहीं देगा. ठीक है, उसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट जाएगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, दैट मींस इफ देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन ऑब्वियसली देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ योर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ. एक छोटा सा प्रॉब्लम करा लिए. Then we are talking about your motional EMF beta. Due to translation motion of a conducting, the EMF is the, what is the formula we derived? E is equals to BLV. And direction of induced current is always from low potential to your high potential. The induced current is from your low potential to your high potential. And direction is being given by your Fleming's left hand rule beta. Thumb represents the velocity, forefinger represents the direction of field, middle finger represents the direction of your induced current.
अगर हम लोग इसमें कंडक्टर लेंगे, राइट नाउ सी हियर, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल विल बी द फ्लो ऑफ योर करंट. Okay, take your Fleming's left hand rule. Keep the thumb in the direction of velocity, forefinger in the direction of magnetic field. So flow of current is always from which potential to which potential बेटा? Charge of electron के लिए लो पोटेंशियल से लेके हाई पोटेंशियल के, है कि नहीं? Forefinger should be in the direction of your field. Thumb should be in the direction of your velocity. Middle finger will give me the direction of current. Induced current is always from low potential to higher potential beta. Low potential to your higher potential. That means there is a flow of a current right now from where? Point P to your Q. Here beta. ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस सर. कल एग्जाम लिखे आप लोग, पेपर थोड़ा टफ था, अगर एक 20 क्वेश्चंस भी कर लिए तो काफी था उस पेपर में. करे एलडी के बच्चे?
क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? चलो नेक्स्ट वाला वीडियो मोशनल EMF due to rotation of rod. इससे पहले ओनली ट्रांसलेशन होता, अब यहाँ पर रोटेशन हो रहा है बेटा. ड्यू टू योर रोटेशन ऑफ योर रॉड with constant velocity, with your constant velocity omega about one end, okay beta. See, this is your rod which is being fixed at one end and it is rotating with an angular velocity omega. Length of the rod मान के चलो मेरे पास L है. This is the total length of the rod. Okay. Now I'm taking one small element of this rod beta as it is a continuous body. जिसका width है dx and from the axis a distance of x है and it is moving with certain linear velocity v. circular motion में move कर रहेगा. v is equals to x into omega लिख सकता हूँ और इसके अंदर magnetic field जो है ना into the paper इस तरह से within the magnetic field है and it is into the paper like this. ठीक है. So when it is moving in the circular path तो ये हो जाएगा एक circular path इसका. वैसे different path का different velocities रहेंगे बेटा. So tell me which end will be higher and which end will be the lower end बेटा. ये point P है और point Q है. Take your right hand rule. Take your right hand. Keep the fingers in direction of velocity. Magnetic field inward. Thumb is moving in the negative x-axis. यानी P will be at your positive end and Q will be at your negative end. Again, then induced EMF निकालो because of the small element. So DE will be equal to your B into L will be equal to dx into V. V will be equal to how much beta? X into omega because E is equals to BLV है ना बेटा. L की जगह हम लोग we are talking about only for dx element. Velocity is your x into your omega. X is your radius, isn't it? Now integrate on both the sides. Integral of dE is equals to integral of B into omega into x into your dx. Limit of the rod is 0 से लेके L तक and potential of the rod is from the point P to your Q. Integral of D is nothing but E. So it is your EMF of your here upper limit minus lower limit. So the integral of D is nothing but E. So it is your potential of your Q minus potential of your P is equals to, isn't it? Higher potential minus lower potential. So it is your higher potential to your lower potential. So we need to write always from your higher potential to your lower potential. Integral of dE will be equal to how much beta? E. Okay. So from lower limit to upper limit. So ये हो गया lower limit for this one is how much for me? Q. Upper limit is your P. Okay. So upper limit minus lower limit करेंगे. So we'll be getting here potential of your P minus potential of your Q will be equal to B omega is out. Integral of your x into your dx. Limit is 0 to your L. Integral of x into dx is how much beta? L square divided by 2. Isn't it? So I can write here EMF of your P minus EMF of your Q is equals to your. This will become for me B into L square into omega divided by 2. आया सभी को? Because integral of your x to the power of n into dx will be equal to your x n plus 1 divided by n plus 1. So 1 plus 1 is 2. So it is 2 by 2. Limits are 0 to L. So it is
this one. So EMF of your PQ rod will be equal to your half of your B into your L square into your omega. So this is the magnetic induced EMF due to the rotating of your rod. So whenever a rod is being rotated in a magnetic field, the EMF is being calculated by the formula half into B into L square into your omega. आई बात समझ में सभी को? Yes, sir. अगर रॉड रोटेट कर रहा है तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी योर BL स्क्वायर इनटू योर ओमेगा. अगर रॉड रोटर ट्रांसलेट कर रहा है तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू BLV. BL और V में अगर एनी दो ऑफ देम लाइक से BRL और LRV और VRB कोई भी दो अगर पैरेलल है तो ईएमएफ 0 बनेगा. And direction of induced current is from your lower potential to your higher potential बेटा. And direction is given by your Fleming's left hand rule. ठीक है ना, इसको जरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो और रिकॉर्डेड भी है, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं इसकी बेसिकली. सो ट्राई टू डू इट ट्वाइस एंड थ्राइस, देन ओनली यू कैन डू द एप्लीकेशन ऑफ दिस वन, वरना एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी. डायरेक्शन पे जरा अच्छी तरह से कंसंट्रेशन करो, इट विल हेल्प यू आउट फॉर दिस वन. ठीक है, एंड टुमारो सेशन ऑफ ए क्लास विल ट्राई टू गो फॉर द डेरिवेशंस ऑफ दिस वन इन द डिटेल. और कल से क्लास शार्पली आप लोग 1 o'clock को ज्वाइन 1:15 को ज्वाइन कर लीजिए बेटा. आपकी क्लास डेली 1:15 से लेके 2:15 तक रहेगी. सो प्लीज डोंट ट्राई टू डिले इट. आप एक 5 मिनट पहले ही आके ज्वाइन करने की कोशिश कर लीजिए. मैं 1:10 तक और 1:05 तक मैं आपको आईडी ऑन कर दूंगा, सेम आईडी. सो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास बिफोर 1:15 सो दैट 1:15 से लेके 2 तक हम लोग इफेक्टिवली क्लास ले सकें. ठीक है, चलो टेक केयर बेटा, बाय.